Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, अंग्रेजी में हेडलाइंस के बाद अर्जुन। At the stock market, Sensex falls by 111 points, Nifty sheds 28 points, rupee weakens by 7 paise against the US dollar. Maruti Suzuki India's monthly total sales rises 5.7% to 1.56 lakh units in June. And goods and services, the tax collection for May stands at 1.44 lakh crore rupees. आर्थिक सुर्खियों में सेंसेक्स 111 अंक और निफ्टी 28 अंक के नुकसान से बंद हुए। डॉलर के मुकाबले रुपया भी 7 पैसे कमजोर हुआ। मारुति सुजुकी की मासिक बिक्री जून के दौरान 5.7% बढ़कर 1,56,000 इकाई दर्ज हुई और मई माह में जीएसटी कर संग्रह लगभग 1,44,000 करोड़ रुपए के स्तर पर दर्ज हुआ। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की गिरावट से 111 अंक गिरकर 52,908 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% के नुकसान से 28 अंक गिरकर 15,752 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.7% की बढ़त दर्ज हुई और स्मॉल कैप सूचकांक भी 0.1% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा। At the stock market, Sensex at the Bombay Stock Exchange fell by 111 points or 0.2% to end at 52,908 points today. Nifty at the National Stock Exchange shed 28 points or 0.2% to 15,752. In the broader market on the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose by 0.7% and the small-cap index gained by 0.1%. Among sectoral indices, the energy index tumbled 4%, oil and gas index tanked 3.2%, and the power and the utilities index fell by 0.8% each. Among the advancing indices, the FMCG index jumped 2.5%, realty index climbed 1.7%, basic materials and the finance indices added 1% each, consumer discretionary index rose by 1.8%, tech and the IT index advanced 0.7% each, healthcare index moved up 0.6%, and the capital goods index ended 0.5%. Let's have a look at some corporate action as well. The country's largest car maker, Maruti Suzuki India, has reported a 5.7% year-on-year increase in total sales at 1.56 lakh units in June. Sales of mini cars comprising Alto and Espresso declined to 14,442 units compared to 17,439 units in the same month last year. Sales in the compact segment, including models such as Swift, Celerio, Ignis, Baleno and Desire, however, increased to 77,746 units against 68,849 units in June 2021. Sales of mid-size sedan Ciaz increased to 1,507 units last month from 602 units in June 2021. Exports jumped to 23,833 units in June against 17,020 vehicles in the corresponding month last year. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 8 पैसे की गिरावट से 79 रुपए 4 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। पुनीत, अगर शेयर बाजार की खासतौर पे बात करें तो शेयर बाजार ने कहीं ना कहीं एक अपनी मजबूती जो है वो तकरीबन 51-52 हजार के स्तर पर बनाई हुई है, अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं, और वहीं निफ्टी भी तकरीबन 15,000 के स्तर से ऊपर अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाता है और वो 15,000 के स्तर से नीचे नहीं गिर पाता। पिछले हफ्ते भी हमने ऐसे चर्चा करी थी कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव हैं और जो घरेलू चिंताएं हैं, चाहे वो मुद्रास्फीति से संबंधित हो, महंगाई से संबंधित हो या और भी कहीं सारी आर्थिक चुनौतियां थी, अगर उनको हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि कंपनियों जगत में इसके नतीजे उतने बेहतर शायद न दे पाएं। लेकिन चूंकि कल ही अगर हम पहली तिमाही जैसे समाप्त हुई है, क्या माने कि
तो हमारा जो शेयर बाजार है वो निवेशकों का भरोसा जीतने में कितना कामयाब रहा है और आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जो हम कंपनियों के नतीजे पहली तिमाही के देखेंगे वो कितने उत्साहजनक निकल के आ सकते हैं। तो अमित, आपने सही कहा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत चैलेंजिंग है पूरे अर्थव्यवस्था के लिए। चाहे हम इंटरेस्ट रेट्स की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें या हम सप्लाई चेन्स के जो इश्यूज हैं उसकी बात करें, तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इकोनॉमी काफी टफ सिचुएशन से गुजर रही है। लेकिन अगर हम जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, जैसे जो आज जो आंकड़ा आया जीएसटी कलेक्शन का, और पिछले ईयर से अगर ईयर और ईयर हम कंपेयर करते हैं तो करीब 56% जीएसटी कलेक्शन में बढ़त आई है। तो इससे हमें ऐसा संकेत मिलता है कि इकोनॉमी की जो स्थिति है वो उतनी खराब नहीं है, बल्कि वो अच्छा कर रही है, क्योंकि जीएसटी सीधा सेल से रिलेटेड है और इससे हमें लगता है कि इकोनॉमिक डिमांड जो है वो भी कोलैप्स नहीं हुई, वो ठीक चल रही है। तो कुल मिलाकर मैं कहूंगा कि डिस्पाइट लॉट ऑफ चैलेंजेस इकोनॉमी अच्छा कर रही है और वो इसको काफी मैं कहूँगा काफी रिजिलियंस से फेस कर रही है। और यही स्थिति मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट की भी है, क्योंकि इकोनॉमी में जो चैलेंजेस हैं वो सीधा स्टॉक मार्केट पे रिफ्लेक्ट करते हैं। हमें लगता था कि मार्केट में काफी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि एफआईआईज आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी पैमाने पे उनकी सेलिंग जारी है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की वो सेलिंग कर चुके हैं पिछले 6 महीनों में। उसके बावजूद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के द्वारा जो बाइंग हुई है उससे बाजार में मजबूती बनी हुई है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन और मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के बाद जब मैक्रो सिचुएशन बेटर होगी, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर होगी, तो मार्केट्स में डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ रहेगी। एक खबर पे बारे में और भी मैं उसको भी जल्दी से वो खबर पढ़ देता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है और जून महीने में ये बढ़कर 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुआ, जो 56% अधिक है। नई दिल्ली में 5वें वस्तु और सेवा कर दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद जून महीने में जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी प्रणाली ने कर विसंगतियों को दूर कर दिया है। पुनीत, आपने भी अभी भी जिक्र किया कि जो जीएसटी कलेक्शन है वो क्या हम उसको एक इंडिकेटर मान सकते हैं कि जो व्यापारिक गतिविधियां या आर्थिक गतिविधियां थी वो बिल्कुल स्थायी तरीके से या निरंतर तरीके से अपने आगे की तरफ बढ़ रही हैं और उसमें तेजी जारी है। और जिस तरह से मैंने अपने पहले सवाल में भी आपसे पूछा था, क्या हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण हैं कि हमें कंपनी जगत से जो पहली तिमाही के नतीजे आएंगे वो कम से कम बेहद उत्साहजनक तो नहीं, लेकिन वो उम्मीद से बेहतर होंगे? बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमें एक्सपेक्टेशन थी, हमें या मैं कहूँगा हमें अंदेशा था कि इकोनॉमी में काफी नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से या जो भी दूसरे कारक है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि जीएसटी सीधा सीधा जो सेल्स है, इकोनॉमी में कंजम्पशन है, उससे रिलेटेड है, तो आप ये मान सकते हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन जो है वो अभी बरकरार है, बल्कि वो बेहतर हो रही है। साथ में मैं कहूंगा जो आंकड़े कल आए थे, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के जो ग्रोथ आई 18% की ग्रोथ आई, उससे भी मैं ये अंदाजा लगाता हूं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी मजबूत है। तो डेफिनेटली ये सब जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि हालांकि हमारे सामने चैलेंजेस हैं रूपी को लेकर, ट्रेड डेफिसिट को लेकर, लेकिन फिर भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस बेहतर है और कंपनी जगत के जो नतीजे आएंगे मुझे लगता है वो उम्मीद से बेहतर होंगे। Puneet, today the Nifty Energy Index fell by 4% by almost 986 points because of the government's announcement to impose a windfall tax on the oil and gas sector. Could you give some clarity about how it impacts the energy space? So, in fact, it is beneficial for domestic investors and for domestic consumers on two bases. One, of course, is the tax has been imposed on exports of petroleum products by domestic players. So, some companies which are importing crude oil and then exporting products like diesel, petrol, and ATF to other countries, they were making very huge gains. And government has imposed tax on that. They have imposed 13 rupees on diesel. So it's like the export tax which was imposed on steel products.
so that these products will then stay in the country and therefore help us to bring down prices. So while on one hand it will gain some revenue for the government, on the other hand it will help increase the availability of petroleum products within the country and therefore keep those prices under check. So I think to that extent the intent is to keep inflation under check and to raise taxes wherever government can do so without hurting the corporate sector. Do you see that correcting a bellwether stock like Reliance Industries because of this of the weightage in the Sensex and Nifty, even though we don't want to go into stock-specific action, but because of this announcement in terms of imposing a windfall tax on refinery products meant for export? So in fact, today's fall in the index, if you look at the stock market indices, was only because of these large stocks like ONGC, which fell about 13%, and NTPCs and Oil India Limited and Reliance Industries. Reliance Industries, of course, is the heaviest, has the maximum weight in the index, and it fell about 7-8%. So clearly, and companies' profitability will definitely be hit because their exports, and they were making huge refining margins on those petroleum products. That will be curtailed to some extent. Yes, but I don't see this as an ongoing negative impact on the index. I think it's a one-off kind of hit on the stock, and I don't think it will continue to be a burden on the index or the stock market going forward. Puneet, what's your take on the Nifty Auto we have the sales report from Maruti Suzuki India's where the monthly total sales has gone up by 5.7% to 1.56 lakh units in the month of June. Does this also compare favorably to other sales result of auto companies? Yes, in fact, across the entire auto spectrum, we've seen sales figures have gone up very impressively. In fact, in case of Tata Motors, the sales have zoomed hugely. And this validates what has been noticed in the stock market over the last few weeks. We have seen the auto stocks, whether Maruti or Tata Motors or Mahindra & most of the automobile stocks, they have done very well. In fact, some of them are ruling at 52-week high levels now. So market was anticipating that automobile sector will pick up, and we have seen that availability of components and availability of semiconductor chips, all the supply chain issues which are plaguing the automotive sector, I think they have been sorted out now, and this sector is doing very well, and it's very good because automobile sector plays a very important role in overall economic growth of the country. So I think automobile companies are doing well, and we expect that they will continue to do well in near future. पुनीत, अभी हम चर्चा कर रहे थे जिस तरह से ऑटो सेक्टर ने बहुत दिनों बाद अपना जोश शायद दिखाया है और कहीं ना कहीं उभरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि क्योंकि एक बहुत बुरे दौर से ऑटो क्षेत्र गुजर चुका है, वो दौर अब समाप्त हो चुका है, चाहे वो सप्लाई चेन से संबंधित परेशानियां हो या महंगे कंपोनेंट से संबंधित परेशानियां हो, और अब ऑटो क्षेत्र चूंकि वो बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार भी उत्पन्न करता था और ऑटो सेक्टर उस चुनौतियों से उबर कर बाहर आ चुका है? बिल्कुल, आपने सही कहा, और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं कि पिछले 7-8 साल से हम देख रहे थे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी, काफी चैलेंजेस से फेस कर रहे थे, और अब जो पिछले 2-3 महीने में हमने ट्रेंड देखा है, और पहली बार इस महीने जो फिगर्स आई हैं वो ये बताती हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो वर्स्ट डेज हैं दे आर बिहाइंड अस, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड दे विल ग्रो इन द नेक्स्ट few months. पुनीत, अभी भी जो महंगाई के आंकड़े हैं या इन्फ्लेशन है वो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मॉनसून सीजन शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं हमको ये भी मानना पड़ेगा और जो स्वाभाविक भी है कि सब्जियों की महंगाई जो है ये मौसमी तौर पर ही सही लेकिन इस थोड़े दिन तक हमें सताएगी. अमित, देखिए, जो महंगाई का जो दौर है, हमें ऐसा लगता है कि इसका जो पीक था वो अब हमारे पीछे है और आने वाले समय में हम महंगाई कम होते देखेंगे. उसके 2-3 मुख्य कारण हैं. पहला, सबसे बड़ा कारण यह है कि जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, डेफिनेटली उससे डिमांड में कमी आई है. जो इन्वेंट्री बिल्डअप चल रहा था उसमें डेफिनेटली कमी आई है. दूसरा, हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस के, वो हम देख रहे हैं कि उसमें भारी गिरावट आई है. इनफैक्ट मोस्टली कमोडिटीज आर नाउ डाउन बाय 30% फ्रॉम द पीक. तो और तीसरा, जो हम अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े देख रहे हैं, कल अमेरिका में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर आंकड़े आए थे, जो कंज्यूमर वहां पर स्पेंडिंग होती है, और वहां भी हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसमें काफी गिरावट आ रही है. तो मेरा अपना अनुमान यह है कि अगले 2-3 महीनों में
हम देखेंगे कि जो आंकड़े हैं वो हमें क्लियरली ये बताएंगे कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है और जो प्रॉब्लम्स थी चाहे सप्लाई चेन को लेकर चाहे इन्वेंट्रीज को लेकर वो काफी हद तक सॉल्व हो रही है। मेरा पूरी उम्मीद है मुझे कि सितंबर या अक्टूबर ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन विल नॉट बी अ बिग चैलेंज। मतलब ये माना जाए कि जो त्योहारी मौसम आएगा भारतीय लोगों के लिए वो अच्छी खबरों के साथ आने की पूरी उम्मीद जगाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है अब की बार जब तक ये फेस्टिव सीजन शुरू होगा तब तक खुशनुमा माहौल ज्यादा होगा और जो अभी चैलेंजेस है नेगेटिव सेंटिमेंट कम होगा। जी, चर्चा को जारी रखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। पुनीत, हम चर्चा कर रहे थे कि जो अर्थव्यवस्था में महंगाई की जो मार है वो शायद अब धीमी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ क्या इस तरह की जो अंदेशे बाजार में थे कहीं ना कहीं मंदी अर्थव्यवस्था में अपनी दस्तक दे सकती है या मंदी भी एक चुनौती बन सकती है? कितना सहमत हैं आप इन सब बातों से? देखिए अमित, मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम एक बारी तो एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक स्लोडाउन देखेंगे क्यों, और सेंट्रल बैंक्स का वो का मंशा भी यही है। बल्कि अमेरिका में यदि आपको मैं बताऊं तो पहले क्वार्टर यानी जो मार्च एंडिंग क्वार्टर था उसमें जो डेटा आया था उसमें कॉन्ट्रैक्शन आई थी, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो जून क्वार्टर है यानी दूसरा जो क्वार्टर था उसमें भी इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लैट होगी या शायद नेगेटिव हो सकती है। तो अमेरिका में जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें ऑलरेडी हम बहुत बड़ा स्लोडाउन देख रहे हैं। हालांकि ये क्योंकि स्लो आंकड़े आते हैं तो अगले महीने तक शायद ये हमें आंकड़े आएंगे सामने, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन कर रही है। भारतीय इकोनॉमी में भी डेफिनेटली उसका एक असर आएगा, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी हम बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7.5%, 7.8% की एक्सपेक्टेशन है, तो मुझे लगता है कि हम इस को झेल जाएंगे। मे बी वी विल स्लो डाउन टू 6.5 और 7% जीडीपी ग्रोथ, लेकिन डेफिनेटली एक स्लो डाउन तो डेफिनेटली आएगा। Puneet, the Nifty Metal Index was just in the green today. In the background of all the volatility that we have seen, the index has fallen by 30% in the last 2 months as a conservative figure. Do you expect a bounce back soon in the metal index? So Arjun, jury is still out whether the downturn in metal prices has abated or not. Like I said earlier, most of the metal prices, steel, copper, aluminum, zinc, most of these commodity prices have fallen by 30 to 40% from the peak in last month or so. So clearly, metal sector is having a tough time. Having said that, I think the fundamentals of the sector are very good. The companies have made a lot of money. They're sitting on a lot of cash. So I don't see a collapse in stock prices for metals, but definitely they have corrected and they are consolidating. At the same time, I would say that I don't expect the stock prices to rise very fast. I think they will kind of remain in a slow lane for some more time. What about the bank Nifty? Do you expect movement in the PSU bank stocks ahead of the monsoon session in Parliament with the consolidation of PSU banks and the government's announcement that specific banks are set to be sold? So, Arjun, first thing is that the financial sector stocks are likely to do very well in the next upturn in the market, largely because the profits and margins of banks have gone up a lot. Usually in a rising interest rate cycle, banks make a lot of money because the deposit rates don't go up as fast as the lending rates go higher. So banks are supposed to do very well. On top of it, I think PSU banks are very well placed because they have a very large deposit franchisee. They are able to collect funds at fairly low cost. And at the same time, the NPA issues facing PSU banks are behind us now. So my own guess is that valuation in PSU banking space is very attractive. And going forward with government's reform drive,
I'm sure that PSU banks will attract very good investment interest. पुनीत, एक विशेषज्ञ के तौर पे क्या आम जो निवेशक है या आम जन है जो उसके लिए तो मैं ये एक संकेत समझूं कि बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन काफी बेहतर रहने वाला है और इस पे भी बेहतर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही साथ जैसे पिछले बार आपने कहा था कि वित्तीय संस्थाओं पे भी नजर रखनी चाहिए और उनका भी प्रदर्शन आने वाले समय में बेहतर हो सकता है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं ये मानने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं कि बहुत सारे अच्छे शेयर एक बहुत उचित या कम कीमतों पे मिल रहे हैं। बिल्कुल, और खासतौर से जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर स्टॉक्स हैं और पर्टिकुलरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको हैरानी होगी कि डिविडेंड यील्ड जो है वो 8% से लेके 11, 12, 13% तक डिविडेंड यील्ड हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव है। प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी बहुत कम है। तो और ये बात साफ है कि यहाँ पर जो बैंकिंग स्पेस है इसमें अब जो एक चैलेंजेस थे एनपीएस को लेकर वो अब नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव स्पेस है। इनफैक्ट कुछ इंस्टीट्यूशन ने तो अच्छा डिविडेंड बहुत डिक्लेयर किया है, बोनस भी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पीएसयू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस will do very well in this next after. चलिए नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार के हालों पर। एशियाई बाजारों में आज गिरावट के साथ बंद हुआ। जापान का निक्केई 1.7%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.3%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.2% की गिरावट से बंद हुआ। हांगकांग का शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद रहा। इस बीच चीन में पिछले 13 महीनों में निर्माण गतिविधियों में सर्वाधिक बढ़त जून के दौरान दर्ज हुई। हालांकि जापान में पीएमआई सूचकांक में गिरावट रही। दक्षिण कोरिया के पीएमआई में भी मामूली गिरावट नजर आई। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.4% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Puneet, very briefly, we had stories about China lockdown and how it's affected manufacturing, but right now the data suggesting that the manufacturing PMI has risen to 51.7 in the month of June from 48.1. So anything above 50 is good news as far as China's manufacturing capability is concerned. Why the statistical change from the news that was being driven earlier? So China news has actually been very positive in last few weeks. In fact, the reopening of the manufacturing sector, they've eased COVID curbs a lot, and the Chinese economy seems to be picking up very well. In fact, Chinese stocks have been the best performing stocks in the world in last 1 month. They have gone up by about 16% in last 1 month, which is one of the best performing performances by these stocks. So clearly, Chinese economy is easing up on the curves they had earlier. And that is probably one of the reasons why supply chains have also started improving across the world. So short term, I think Chinese economy is reopening. They're also supporting the economy with easy money policy. In fact, People's Bank of China is the only large central bank in the world which has actually eased money policy. They're pumping in more money and they're reducing interest rates. So I think they're supporting the economy now, and we are seeing those results in terms of their statistical data. पुनीत, इन सारी खबरों के बीच में एक सवाल या एक शंका मन में जो उत्पन्न होती है वो ये कि चूंकि बाजार बंद थे, निश्चित तौर पे उनका प्रदर्शन तो था ही नहीं, तो जो भी आंकड़े आते वो पहले से बेहतर नजर आते। क्या ये मानना पर्याप्त कारण है या वाकई में वहां पे निर्माण गतिविधियां हैं जो उनके लॉकडाउन से पहले के मुकाबले भी बेहतर हुई हैं? और आपने कुछ हद तक सही कहा कि वहां पर क्योंकि बेस इफेक्ट था तो बेटर लग रहा है, लेकिन और चाइना में काफी चैलेंजेस हैं। वहां का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें काफी अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो थोड़ा धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा अमित की चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $12 ट्रिलियन का वहां पर उसका साइज है, और वो धीरे धीरे रीओपन हो रही है और डिमांड भी वहां पर अच्छी है। तो आप ये मान के चलिए कि वहां कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है, स्लो डाउन जरूर है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 4 से 4.5% की होगी इस साल। तो मैं ये कहूंगा कि इतनी बड़ी इकोनॉमी में 4% ग्रोथ इज वेरी गुड। लेकिन जो पहले था कि चाइना की इकोनॉमी पे पूरे दुनिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट थी, मुझे लगता है ऐसा नहीं है अभी, और चाइनीज इकोनॉमी इज ऑल्सो डूइंग वेल।
Well, let's move on from the world's second largest economy to the world's largest economy, the United States of America. On Wall Street ended lower yesterday, finishing the month and the quarter on a grim note, with the S&P 500's worst first half of the year since 1970. Nasdaq had its largest ever first half year percentage drop, while Dow suffered its biggest first half year percentage plunge since 1962. All three indices have posted their second straight quarterly declines. On the core inflation front, data suggests that while a peak appears to have been reached in March, they all continue to soar well above the Fed's average annual 2% target. So the Dow Jones Industrial Average fell 254 points, 0.8% to end at 30,775. The S&P 500 lost 33 points, 0.9% to 3,785, and the Nasdaq Composite Index dropped 149 points, 1.3% to 11,029. In economic data released yesterday, consumer spending, which accounts for more than two-thirds of the U.S. economic activity, gained 0.2% in May, the smallest rise in 5 months. Inflation maintained its upward trend in May. The so-called core personal consumption expenditures price index advanced 4.7% on a year-on-year basis. In May, the smallest increase since last November. The PCE price indices are the Fed's favored measures for its 2% inflation target. What's the magic bullet to kill inflation in the United States right now, Puneet? Difficult question. No, but the Fed is answering it with higher interest rates and significantly higher interest rates. So I think they believe that if they bring down demand side inflation, and then definitely and with inventories and supply side problems easing a little bit, I think inflation will be under control in the next 2 to 3 months. So it's not just demand side, there's also the monetarist view because of the Fed raising the discount rate. Yeah. So what they're doing is they're tightening the money supply and they're making money more expensive to reduce demand. I wouldn't say kill demand, but definitely they want demand to come down a little bit, which is already happening. So the data that you read out, particularly the PCE, is real indication that inflation is coming down. Let's have a look at the oil market now. Global crude oil prices rose about 2% today as supply outages in Libya and expected shutdowns in Norway outweighed expectations that an economic slowdown could dent demand. So Brent crude oil futures climbed $2.07 to trade at $111.10 a barrel. U.S. crude futures added $1.80 to $107.56 a barrel. In more news, the Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India is facing difficulty in importing oil at an affordable price since the prices have zoomed globally due to geopolitical concerns. She added, these are extraordinary times. Oil prices internationally are unbridled. While talking about the duty increase on oil, the Finance Minister said that every 15 days, the duty increase will be assessed to see how it develops. Taking into consideration the import duty hike on gold, the Finance Minister said that as an immediate impact, the import will become expensive since India doesn't produce much gold. Puneet, very briefly, the combination of the two stories suggests that India is trying to bring down its current account deficit while sacrificing the gold. They want to ensure that oil supplies are bought at a relatively cheaper rate. So, Arjun, like you said, the current account deficit this year is estimated to be 3% of the GDP. Last year it was 1.2%. So clearly we want to conserve our foreign exchange and not import unnecessary things. Gold, of course, government does not see as an essential import. And we have seen gold imports jump a lot. So they've raised import duty from 10% to 15% in gold today. I think it's a good step. And of course, it's a temporary step. I don't see it sustaining for too long, but definitely a good step. Let's have a look now at the gold market internationally. On the multi-commodity exchange, gold futures for August jumped 1,300 rupees to trade at 51,817 rupees per 10 grams. Silver futures for September rose 370 rupees to trade at 58,700 rupees per kilo. पुनीत, सोना कितना सोना है, अभी भी एक स्वाभाविक सा सवाल है कि किस तरीके से अभी सोने की चमक में कितनी चमक और बाकी नजर आती है। देखिए, सोना को बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, पर डेफिनेटली सोने की कीमतें भारत में थोड़ी बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि ये इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ी है और जैसे इन्फ्लेशन कम आएगा ये थोड़ा बढ़ेगा। जी पुनीत, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। At the stock market, Sensex falls at 111 points, Nifty sheds 28 points, rupee weakens by 7 paise against the US dollar. Maruti Suzuki India's monthly total sales rises 5.7% to 1.56 lakh units in June, and GST collection for May stands at 1.44 lakh crore rupees. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.